Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are well and welcome back. We are still discussing number sequences and patterns. In the last video we talked about quadratic sequences and cubic sequences, and in this video I want to do a few questions with all of you to make sure that the concepts of quadratic and cubic both are very clear. The first question that we're going to do says the nth term of a sequence is n cube plus 2. Now n cube plus 2 means this is a cubic sequence, और sequence उन्होंने आपको already दे दिया और उन्होंने आपको sequence की first 4 terms भी दे दिए हैं, which are 3, 10, 29 and 66. You have to calculate the 5th term of the sequence. Now this is very easy. They've already given you n cube plus 2. तो आपने अगर 5th term निकालनी है तो मैं इसका सिर्फ general formula उठाऊंगी, which is going to be n cube plus 2 is equal to the nth term, right? अब nth term is n cube plus 2 और मैंने 5th term निकालनी है, मतलब मैं n is equals to 5 put करूँगी. That means 5 cube plus 2. 5 cube is 125 plus 2, so 127 is the 5th term of your sequence. The second part says the first 4 terms of another sequence T are 4, 12, 32 and 70. By comparing S and T, write down the 5th term of T. अब सबसे पहले it says by comparing S and T. So let's try to compare S and T. T की first term है 4 and S की first term है 3. So 3, this is S and this is T जिसकी first term है 4. And यहाँ पर आपका है n is equals to 1. Second term पे n is equal to 2. The second term for S is 10. The second term for T is 12. ठीक है. Third पे आपके पास n is equals to 3 हो जाएगा. The third term for S is 29 and the third term for T is 32. ठीक है. मैंने first 3 terms लिखी है. Now you want to compare. बेसिकली हो क्या रहा है, आप 3 में 1 ऐड कर रहे हो टू गेट 4, आप 10 में 2 ऐड कर रहे हो टू गेट 12, आप 29 में 3 ऐड कर रहे हो टू गेट 32. दैट मीन्स फॉर टी बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग द टर्म नंबर टू दैट टर्म टू गेट दैट पर्टिकुलर टर्म फॉर टी. फॉर एग्जाम्पल आपने 5th टर्म निकालनी है तो 5th टर्म पे आपके पास n इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. ठीक है. S की आपने 5th टर्म ऑलरेडी निकाली हुई है विच इज़ 127. आपने T की निकालनी है. पैटर्न हमारा क्या चल रहा है, इट्स 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, 10 + 2 इज इक्वल टू 12, 29 + 3 इज इक्वल्स टू 32. तो यू बेसिकली एडिंग द n टू योर टर्म विच इज़ S टू गेट द टर्म फॉर T. तो इसी तरह मैं 5 में 127 ऐड कर दूंगी टू गेट द 5th टर्म फॉर T. तो ये क्या हो जाएगा, 127 + 5 विच इज़ इक्वल टू 132. तो मेरे पास 5th टर्म ऑफ T क्या आ जाएगी, 132. In the last part they are asking you to calculate the expression in terms of n for the nth term of T. Now nth टर्म ऑफ टी आ कैसे रही है, टी की टर्म्स कैसे आ रही हैं, यू आर बेसिकली एडिंग द टर्म नंबर विच इज़ n टू द nth टर्म itself. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म में, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन. इन द फर्स्ट टर्म यू वर एडिंग 1 टू द फर्स्ट टर्म जो हमारे पास थी 3. तो यू वर एडिंग 1 to 3 to get 4. Similarly, in the next term, you were adding 2 to the second term to get the second term for T. That means 2 plus S की second term क्या थी, it was 10. So 2 plus 10 which equals to 12. इसी तरह अगर आपने nth term निकालनी है तो मैं n plus nth term नहीं करूँगी. अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाल रही हूँ मैं 1 plus फर्स्ट टर्म कर रही हूँ. अगर मैं सेकेंड टर्म निकाल रही हूँ मैं 2 plus सेकेंड टर्म निकाल रही हूँ. अगर मैं nth टर्म निकाल रही हूँ तो मैं n plus nth टर्म नहीं करूँगी. नाउ nth टर्म ऑफ s इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज, लेट मी जूम आउट, it's going to be
this. They've already given it in the question, n cube plus 2. तो nth टर्म मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे कर दूंगी n प्लस द nth टर्म विच इज़ n क्यूब प्लस 2. तो मेरे पास जनरल टर्म फॉर t क्या आ जाएगी, n क्यूब प्लस n प्लस 2. So the answer for this is going to be n cube plus n plus 2, which is going to complete your question. Let's have a look at the second question. The first part says that you have the first 5 terms of a sequence 17, 11, 5, minus 1, minus 7, and you want to calculate an expression for the nth term of the sequence. अब सबसे पहली चीज़ अगर आपने expression निकालना है, you need to identify कि वो sequence है क्या. So let's try to calculate the first difference. So 17, your first term is 17, 11, 5, minus 1, minus 7. तो आपका फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा 11 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 6. सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा माइनस 6, राइट. 11 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 6. 5 माइनस 11 विच इज़ अगेन इक्वल टू माइनस 6. माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6. सो द डिफरेंस इज़ कॉन्स्टेंट. तो ये आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. अरिथमेटिक सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a इज़ योर फर्स्ट टर्म, इन दिस केस 17. nth टर्म का आपने फॉर्मूला निकालना है, आपने एक्सप्रेशन निकालना है. तो आई एम गोइंग टू कीप n एज इट इज़. d इज़ गोइंग टू बी माइनस 6. सो 17 minus 6n plus 6, it's going to be minus 6n plus 6 plus 17, which equals to 23. So this is going to be minus 6n plus 23, or you can write 23 minus 6n, whatever way. अब number sequences की सबसे आसान बात क्या होती है, you can always check your answer. Now if I want to check my answer, मैं simply n is equals to 1 put कर लेती हूँ to check अगर मेरी first term according to the expression that I have calculated is the same as that which is given in the question. So I'm going to keep n is equals to 1. 23 minus 6 into 1 is equal to 23 minus 6, which is equal to 17. मेरे एक्सप्रेशन के हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 17, और मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी 17 है. सो द फॉर्मूला और द एक्सप्रेशन दैट आई हैव कैलकुलेटेड इज करेक्ट. सेकेंड पार्ट पे आ जाए. इट सेज दैट द nth टर्म Sn of a different sequence. Now you're talking about a different sequence is found using the formula Sn is equals to n square plus 3n. Again आपने n square देख लिया है, that means this is a quadratic sequence. ठीक है. Work out the first 4 terms of this sequence. Now if you want to calculate the first 4 terms, that means you want to calculate n is equals to 1 पे क्या आता है, n is equals to 2 पे क्या आता है, n is equals to 3 पे क्या आता है, और n is equals to 4 पे क्या आता है. जब आप 1 पुट करते हैं, it's going to be 1 square plus 3n. 1 square is 1, और 3n की जगह हम लिखते हैं 3 into 1. 1 square is 1 plus 3, which is 4. So your first term is 4. Second term 2 square, which is 4 plus 3 into 2 6. Your second term is going to be 10. Third term 3 square 9 plus 3 into 3 is again 9. 9 plus 9 is 18. तो आपकी third term आ जाएगी 18. Fourth term 4 square is 16 plus 3 into 4, which is 12. This is going to equal to 28. तो आपकी fourth term 28 आ जाएगी. The nth term of another sequence is found using the formula Tn is equals to 5n minus 12. Now n के ऊपर कोई power नहीं है. That means this is a linear sequence, or you can say it's also an arithmetic sequence. There are 2 values of n for which Sn over Tn is equal to 6. मतलब Sn की सेम पोजीशन पे टर्म उठाओ, Tn की सेम पोजीशन पे टर्म उठाओ, और उन दोनों को डिवाइड कर दो. यू शुड गेट 6, एंड यू हैव 2 पोजीशंस, 2 values of n for which this is true. You have to calculate the 2 values of n. अब सबसे पहले I have my expressions. So Sn is equal to n square plus 3n, and Tn is equals to 5n minus 12. ठीक है. मतलब इसकी nth टर्म का ये फॉर्मूला है, इसकी nth टर्म का ये फॉर्मूला है, एंड देर आर 2 वैल्यूज ऑफ n फॉर विच Sn ओवर Tn इज इक्वल्स टू 6. Sn की वैल्यू क्या है, इट्स n स्क्वायर प्लस 3n, एंड Tn आपके पास क्या है 5n माइनस 12.
and this should equal to 6. Now I'm going to cross multiply into 5n minus 12. N square plus 3n is equals to, open the bracket, 6 5s are 30. N minus 12 into 6 is 72. Now I'm going to take all of this right hand side to the left hand side to form a quadratic equation which all of you are familiar with. So it's going to equal to n square plus 3n minus 30n plus 72 is equal to 0. N square minus 27n plus 72 is equal to 0. I'm going to middle term. You can use the quadratic formula as well, but I'm going to break the middle term. So n square minus 24n minus 3n plus 72 is equals to 0. Basically middle term breaking ऐसे किया, 24 into 3 minus 24 into minus 3 is plus 72 and दोनों को ऐड करो आपके पास 27 आता है. So I'm going to take n common, n minus 24 minus 3 common from this side, n minus 24 again is equal to 0. अब आप n minus 24 common ले लो, तो n minus 24 into n minus 3 is equals to 0. Now you're multiplying two things together to get 0. आपके पास दो ही केसेस हो सकते हैं, या this is equal to 0 या this is equal to 0. So n minus 24 is equals to 0 से आपके पास n is equals to 24 आ जाएगा, यहाँ से n is equals to 3 आ जाएगा, which are your answers for n. Let's have a look at this question. This is the last question before we conclude quadratic and cubic sequences. The first and the nth term of the sequence A, B, C are shown in the table below. So n cube, 4n, n plus 1 whole square. You have to calculate the 8th term and the 12th term. सबसे पहले you have to complete the table. So I'm going to pause the video, complete the table on your own, and I will be back with a filled table. Okay, so if your table looks like this, you have done it correctly. कैसे किया है मैंने, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 है, सेकेंड टर्म पे n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड टर्म पे n इज इक्वल्स टू 3, फोर्थ टर्म पे n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5. सो द फर्स्ट टर्म फॉर हियर इज़ 1 और इसकी nth टर्म क्या है, n क्यूब. तो ये निकालने के लिए मैं n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँगी, तो मेरे पास हो जाएगा 2 क्यूब विच इज़ 8, राइट. टू कैलकुलेट the third term, I'm going to put n is equals to 3 in 3n cube, so it's going to be 3 cube which is equal to 27. n is equals to 4, 4 cube 64, 5 cube 125. इसी तरह इसका सेकेंड वाली रो का जो nth term है that should equal to 4n, that means 4 into 1 which is 4, n 2 जब डालोगे तो वो 4 into 2 हो जाएगा which is 8, n is equals to 3 डालोगे तो वो 4 into 3 हो जाएगा which is 12. बेसिकली 4n आपने निकालना है और मैं कह रही हूँ n इज इक्वल्स टू 3 है, तो मैं n की जगह 3 पुट कर दूंगी टू गेट 12. सो व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, 4n will equal to 12. When n is equals to 4, 4n will equal to 16, and this the same way you can calculate the last row as well. Now you want to calculate the 8th term of sequence A. Sequence A का nth term का फॉर्मूला क्या है, n क्यूब. आपने 8th term निकालनी है which means n is equals to 8. तो n क्यूब में जब आप n इज इक्वल्स टू 8 पुट करोगे वो हो जाएगा 8 क्यूब विच इज़ गोइंग टू इक्वल टू 512. इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द 12th टर्म ऑफ सीक्वेंस C. सीक्वेंस C आपके पास क्या है, n प्लस 1 होल स्क्वायर. 12th टर्म मीन्स n इज इक्वल्स टू 12, तो आप क्या करोगे, 12 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 169. तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 169. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि सीक्वेंस ए की कौन सी टर्म 15625 के बराबर है. सो बेसिकली यू वांट दिस टाइम यू वांट द पोजीशन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिमिलर क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वीडियो में kth टर्म वाली बात की थी. आई थिंक इज इन द सेकेंड वीडियो. सो 15625 इज गोइंग टू इक्वल टू n क्यूब, क्योंकि वो सीक्वेंस ए का ही एक टर्म है. तो आप क्या करोगे, आप क्यूब रूट 15625 ले लोगे टू गेट n, एंड n विल इक्वल टू 25. सो द 25th टर्म इन द सीक्वेंस ए इज इक्वल टू 15625.
Second part is similar. Which term in sequence C is equals to 10,000? अब sequence C आपके पास क्या है? It's n plus 1 whole square. अब 10,000 is a term of sequence C, so it's still going to follow the same general formula or general expression. अब मैं क्या करूँगी? n plus 1 is equals to under root 10,000. n plus 1 will equal to 100. n is equals to 100 minus 1, which is equal to 99. So the 99th term in sequence C will equal to 10,000. ठीक है? The last part is the first four terms of sequences D and E are shown in the table below. This time you want to calculate the fifth term and the nth term. So use the results from part A to find the fifth and the nth term of sequences D and E. Part A में आपके results क्या हैं? These are your results in the first part and you want to calculate the fifth term and the expression of the nth term. अब सबसे पहले इसकी first term 5 है, इसकी first term 1, 4 और 4 है. 5 आपके पास किस तरह आ रहा है? You're basically adding 4 and 1 to get 5. 8 and 8 to get 16, 27 and 12 to get 39, 64 and 16 to get 80. तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगी? आप 125 और 120 को ऐड करेंगे. व्हेन यू ऐड 125 एंड 120 यू गेट 145 एज योर आंसर, राइट? एंड बेसिकली आप कर क्या रहे हो? ये वाले दोनों रोज ऐड करो. सो ओवर हियर यू विल हैव 4n प्लस n क्यूब. इसी तरह ट्राई, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ पैटर्न इन दिस रो एंड द रोज अबव. If you are thinking 4 minus 4 is 0, 9 minus 8 is 1, 16 minus 12 is 4, 25 minus 16 is 9, you are correct. इसी तरह 36 minus 20 is going to be 16. And आप basically क्या कर रहे हो? This minus this कर रहे हो. So this is going to be n plus 1 whole square minus 4n. In such questions, whenever you have a table, always try to work out a pattern in the vertical columns. ठीक है? रोज को छोड़ दें. इफ़ यू गेट सच अ क्वेश्चन, ऑलवेज ट्राई टू वर्क आउट द पैटर्न्स इन अ वर्टिकल कॉलम एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन.